Karachi is a kaleidoscope that captures a nation's extremes. Down by the beach, the scenes are breezy, carefree, and of course, counterintuitive. They're at odds with images many outsiders conjure at the mention of Pakistan. But in this, its largest city, Pakistan's extreme contradictions exist together in a chaotic and dangerous jumble, a place where saving lives can get you killed. Naseem Munir is a loving wife and a proud mother of 3. She's also got a job that means when she heads off to work, she may not come home. खबर ना है तो मतलब मां ब्रेक थींदम या न ईंदम वापस मां पंहिंजे ॿारनि सां मिली सघंदम या न मिली सघंदम इन चीज़ जे लाइ मां तैयार थी वेंदी तैयार आहे मेंटली तो बिल्कुलु ही कम इन करे कयां थी त ही कम बि त करिणो आहे न इम्पोर्टेड कमु आहे ॿियनि कमनि खां वधीक त असां कंहिंजी लाइफ बचाइण था वञूं कंहिं ॿार खे माज़ूरी खां बचाइण जे लाइ था वञूं अगरि हिकिड़ो ॿार पैरालाइज़ थिए थो माज़ूर थिए थो त उनजो पूरी जेका फैमिली आहे उहा डिस्टर्ब थिए थी मतलब हिकिड़ो मरण और हिकिड़ो पोलियो जो मतलब अटैक थियण हिकु ही ॻाल्हि आहे और असांजे मुल्क में तो ज़ाहिर है जेके इन तरह जा ॿार हूंदा आहिनि उन्हनि जो को भी फीचर ना हूंदो और आपका लंच भी बना के रख दिया है मैंने ठीक है. It's no exaggeration to say protecting kids against a disabling and deadly disease makes Karachi a battleground and Naseem a warrior. नहीं जा सकती ना पोलियो में. पोलियो में कैसे डर होता है हम लोग कितना खौफ में करते हैं पोलियो में मार देते हैं ना आप कैसे जाओगी बच्चों को नहीं ले जाती पोलियो में बच्चे थोड़ी आते हैं आप दादी के साथ चले जाओ पोलियो में वर्करों को मारा था ना देखा था ना आपने. You've got a big day ahead of you. Are you nervous when you go out on those? No, I am not nervous. I am habitual to go to in danger areas, so I am not afraid of anything. I am soldier. You're a soldier? Yes, I am soldier. That's the way you look at it. You've got to fight a war against polio. Yes, sir. It is my mission. It's a mission that shouldn't exist. Polio has been eradicated in just about every corner of the world. But Pakistan is one of only 3 countries where the crippling virus still threatens. The others, Afghanistan and Nigeria. And for as long as polio exists anywhere, it's a global threat. Recently, the World Health Organization declared it a public health emergency. And very soon we get a sense of why it's such a difficult problem to control. The size of the security detail hints at the suspicion and outright hostility that lurks within this neighbourhood. Many residents have been convinced by a concerted propaganda campaign that the polio vaccination program is an international plot against the people of Pakistan. बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं अभी पिलाया है अच्छा निशान लगा इसको पिला दिया है हाँ सही है और नहीं है अच्छा इनके कितनी उम्र है पूछो बच्चों का इनका पिलाया इसको पिला दिया कितने बच्चों को पिलाया 2 बच्चों को पिलाया अच्छा ऊपर है इनसे पूछो ऊपर बच्चे हैं While some parents allow their children to have the drops, others do their best to keep their kids away from the inoculators. अस्सलाम वालेकुम छोटे बच्चे हैं 5 साल से छोटे बच्चों को कतरे पिलाना 5 साल से छोटे नहीं हैं हमने सुना है आपके घर में छोटे बच्चे हैं अच्छा नहीं है सबसे छोटा भाई अच्छा 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 they don't have under 5 years but she's not giving up that easily. After the man in this apartment says no young children live here, Naseem realises that he has the key to the rooftop where we want to film,
so she knocks again. बच्चे हैं छोटे. I have doubt. They are also children. They are hesitant. अच्छा वो आपके पास चाबी है ऊपर छत की, थोड़ा शूट करना है छत की वो खोलिएगा. ठीक है. अच्छा ये 5 साल का हो गया ये तो छोटा लग रहा है. छोटा है तो फिलहाल. हाँ छोटा है ना ये. आ जाए ना. आ जाओ बेटा. He before he is refused, now he is vaccinated. So he will be vaccinated now, but yes, before they were vaccinated. Before he is refused, so he don't have an under 5 years. But I saw them, so he is 4 years, 3 years. So these are his first vaccination shots. Yes. बेटा मुंह खोलो कुछ भी नहीं है देखो. सब बच्चे पीते हैं ना, फिर आप जाके टीवी देखो. ओके. चाबी है ना आपके पास, आप दे रहे हैं ऊपर की. Because so many people in Pakistan have never been vaccinated against polio, the risks are greater, even for those who've had the drops. So every child needs to be immunised multiple times until they turn 5. It's the only way to be sure. That means Naseem and her colleagues face danger over and over again. Just a few months ago, 3 of her colleagues were killed as they gave out the drops. In the past 2 years, more than 40 vaccinators have died across Pakistan. So who is it waging war on the health workers? Militant groups like the Pakistani Taliban. ये पोलियो सिर्फ किसी मर्ज की दवा नहीं, तहजीब व अखलाक को बरकरार करने के लिए, तहजीब व अखलाक और इस्लाम को तबाह करने का एक मुहिम है. At their base near the Afghan border in February, senior Taliban leaders were asked if they ordered the attacks. पोलियो के हवाले से ये पाबंदी किसने लगाई या आप लोग ये भी लोगों को मरवाते हैं कि ये सच? पोलियो का सिर्फ तरीका तलबल पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के तमाम संजीदा तबकात जो दीन इस्लाम पर यकीन रखते हैं. The Pakistani Taliban increased its attacks on polio workers after the US tracked down and killed Osama bin Laden in 2011. It's claimed that the CIA was helped by a local doctor, Shakil Afridi, who used the cover of an immunisation drive to help confirm bin Laden's whereabouts. Dr. Afridi is now in prison, despite intense US pressure to free him. शकील अफरीदी जैसे बड़ा मुजरिम, पोलियो से बढ़कर जरासीम कोई नहीं पूरी उम्मत की तबाही का. The American government has just promised that the CIA will never again use immunisation as a cover for intelligence work. But the suspicion and hostility is now entrenched. Two-year-old Fatima lives in a Karachi suburb that's been infiltrated by the Taliban. She has polio. Vaccinators can't come here regularly. The Taliban regard them as spies. It's too dangerous for us as well. We've asked a local journalist to film. Many living here are refugees from near Afghanistan and very poor. There's no sanitation, so conditions are perfect for polio transmission. It's spread through fecal matter, and the virus can survive in places like this for days. We've organised for Fatima to see a specialist at Karachi's biggest children's hospital. क्या नाम है इसका? फातिमा. फातिमा? हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया, बाबा? बाबा. The family says their little girl was given the drops, but clearly not enough to make her immune. You can see that the child is moving this leg, but it's not lifting up this leg. Right? Even if I'm giving a stimulus, there's a little bit of movement here,
but not a lot. But there's some good news. But the muscles which have not been affected or have only been partly affected will gain some strength with physiotherapy, and hopefully she will be able to bear some weight on the leg that is affected. खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ, 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 चलो, चलो, चलो. Even though she'll almost certainly have a limp, the doctor thinks Fatima will be able to walk. Sometimes you are able to help them out with braces and rehabilitation mechanism and make them walk. But of course, the more severe cases, it is not possible to make them walk, and they remain severely disabled. Polio hasn't been seen in the West for decades, but at its peak in the 40s and 50s, it killed or paralysed over 500,000 people every year. Terrifying epidemics saw healthy children and young adults struck down without warning. The disease was brought under control by the development of a vaccine in the 1950s. But as late as the 1980s, there were still hundreds of thousands of infections, mostly in the developing world. Since 1988, a massive global immunisation program has almost eradicated polio, with just a few hundred cases now reported each year. But in Pakistan, the numbers are going up, not down. It's never nice to hear that, but that is unfortunately the truth. We also don't want to be the only remaining country in the world harboring the polio virus and in a way responsible for passing it on to others. Recent outbreaks of polio in the Middle East and China have been traced back to Pakistan, some to water sources right here in Karachi. Every confirmed case is treated like an outbreak because there'll be 200 silent carriers who can infect others. To try to deal with the problem, vaccinators have been stationed at all major transit points across the country. At this toll station on the outskirts of Karachi, polio workers are on duty 24 hours a day, checking every bus for kids under 5. Many are coming from the tribal areas in the north, where the majority of cases are being reported. Is this the first time your child has been vaccinated? تاسو بد خو نه غنئ کنه پولیو کتره تاسو مشومان وتا چې مسله خو نشته ده اوس هیڅ خلک سره مړېږي نه څه واري چې څه کتل سامره شو مړ شو چا ول تاسو ته مړ شو خبرونه کینو. Often it's simply a fear of the unknown or due to rumours that the vaccine contains urine or causes infertility. The people of Peshawar, a majority is refusing. Most people from the tribal areas and KPK? Tribal area. Are they scared or are they suspicious? वो डरे होते हैं या उनको क्या शक होता है क्या? उनको कोई ठोस रीज़न नहीं होता, मतलब आप अगर हम उससे पूछते हैं कि रीज़न क्या है तो अक्सर वो ये कहते हैं कि हमने जो है पड़ोसी है हमारा वो नहीं पिलवा रहे तो हम इस वजह से नहीं पिलवा रहे. कुछ लोग ये कहते हैं और मतलब कोई ठोस रीज़न नहीं होता. नहीं डालते सिरे से नहीं डालते. क्यों नहीं डालते? हमारा में नहीं मानता है. To help change attitudes, the government's enlisted key religious figures. लेकिन अब मैं मीडिया में खुलकर कह रहा हूँ कि ये पोलियो के कचरे इस्लाम और मुसलमानों के लिए नहीं खराब हैं. तो ये इंतहा पसंद जो ये काम कर रहे हैं, पोलियो के लोगों को मार रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं. आप अपने मीडिया में इसको देंगे या नहीं देंगे? Mufti Naeem is a conservative Karachi cleric who runs one of the most influential Islamic schools in the country. Like many other Islamic scholars, he supports the drops. बल्कि ये इंसानियत की जान बचाने के लिए फ़र्ज़ के दर्जे पे, ज़रूरी के दर्जे पे पिलाने चाहिए.
But he says the role of Dr. Afridi in Osama bin Laden's capture has fueled conspiracy theories. जब आफरीदी को छोड़ने का मुतालबा करता है तो लोग समझते हैं कि वाक़तन आफरीदी ही मुलव्वस है इस काम के अंदर, चूँकि अमेरिका क्यों बार बार मुतालबा कर रहा है कि इस बात का कि इसको छोड़ा जाए। अमेरिका जितना ज़्यादा मुतालबा करता है, देखें ना, मुखालफत वहाँ पर पोलियो की नहीं है, मुखालफत वहाँ अमेरिका की है। Pakistani Taliban question why aid organisations focus on vaccinations instead of on US drone strikes in Waziristan that have killed dozens of children. माजूर हो चुके हैं वो ड्रोन है, ड्रोन से बढ़कर कोई ज़्यादा बीमारी दूसरा नहीं है, लेकिन इसकी बंदिश का कोई मुहिम नहीं चलाया जा रहा, न कोई NGO है न कोई दूसरा इदारा है, मगर पोलियो का जो इसलिए कि लोगों का, वहाँ के लोगों का फिर ये माइंड बन गया है कि साला जो कुछ यहाँ गड़बड़ हो रही है, ड्रोन हमले हो रहे हैं, ये पोलियो मुहिम के नाम लेकर जो है यहाँ पर जो है सब कुछ हो रहा है, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ये मामला हल हो जाएगा। Regardless of their attitude to America's role in their country, the vast majority of Pakistanis want the drops. They don't believe the propaganda and they're desperate to protect their kids against polio. But the vaccinators have become the innocent victims in a long-running war between militant groups and the state. Killing them creates chaos and harms Pakistan's international reputation. The state is fighting back, but faces opposition on multiple fronts. Foreign Correspondent obtained the audio from Friday prayers in a town in rural Sindh, not far from Karachi. जंहिंमें 15 मुसलमान मार दी विया आहिनि ऐं 50 सख़्त ज़ख़्मी आहिनि। अॼु हमिलो थियो आहे, हिते अमेरिका वारनि खे एहसास कोन्हे त असीं मुसलमान छो पिया मारियूं, बाक़ी उन्हनि खे एहसास थियो आहे त मुसलमाननि जे ॿचनि जे मथां पोलियो थी पवे, उन्हनि वीचारनि खे वञी फुड़ा पियारियो। The self-styled cleric from a radical Islamic party wouldn't go on camera, but confirmed the voice is his from 2 years ago, and he says he continues to spread this message. ए मास्टर जेके पोलियो पियारण वारा जिन बि छोरनि पोलियो जा फुड़ा पीता आहिनि न, इहे सभु वॾे हुजे खदड़ा हूंदा। He is lying. Uneducated man. Naseem listens as a man she's never met incites a crowd to attack women like her. मथो चप वात में विझी एनजीओस वारे जो हितां लठ ॾिजई, जे हिन पतलून मजा लिंड ये ठका ॾेई निकिरेसि, जे रिपीटर मां कारतूस वञे। मुल्ला थोड़ी को स्कॉलर आया है, मुल्ला जो फतवा ॾियणो हो लॻे तो हे माण्हुनि खे ब्रेन वॉश कंदा आहिनि, इन ई माण्हुनि जे नफ़रत जे करे। If I am in government, I arrest him and I give him punished him. Naseem wants the government to crack down harder on extremists so fellow vaccinators like Salma Jafar can be safe. Salma's lucky to be alive. In January, her polio team was fired on by men on motorbikes. ये मेरे एक गोली यहाँ से लग के यहाँ से आर पार हो गई थी, और एक ये गोली बिल्कुल फंसी हुई थी यहाँ 12 दिन तक। 12 दिन तक मेरी गोली फंसी रही, और उसके अलावा ये मेरे 2 गोलियाँ लगी थी यहाँ से लग के, और ये मेरे पीछे से इधर से निकली। She's still deeply traumatised. Her best friend, Anita, died in her arms. इतनी देर में उन्होंने अनीता पे फायर कर दिया। अनीता के यहाँ पर फायर लगा। जब उसके फायर लगा तो वो बहुत ज़ोर से चीखी बाजी करके। फिर मैं उठ के मैं बाहर जा रहा था, मुझे टाइम लगा उठने में।
इतनी देर में उन्होंने उसको दूसरा भी फायर कर दिया। वो ऐसे के ऐसे सीधी गिर गई। मैं समझी कि शायद वो बेहोश हो गई, लेकिन वो बेहोश नहीं हुई थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। मैंने बहुत मुश्किल से उसको उठा के अपनी गोद में लिटाया और मैं बोलती रही कि रुक जाओ, लेकिन वो नहीं बोली। 22-year-old Fahad Khalil died in the same attack. The avid bodybuilder wasn't even a full-time vaccinator. He was 22. 22 years. He worked for the health department, but volunteered to give out the drops because he felt strongly about protecting children. His family is inconsolable. पता नहीं किन जालिमों को ये सूझी थी। अब पोलियो वर्कर्स को मारना ही क्यों था? पोलियो का सामान लेके फेंक दें, नहीं लगवाना, नहीं करवाएं, सामान लेके फेंक दें, मगर मारे तो नहीं ना। 3 जाने बेमकसद ज़ाया हुई हैं और सब अपने घर के कीमती सरमाए थे। Naseem Munir was working nearby when the vaccinators were killed. She's been shot at herself and says not enough is being done to protect the polio teams. हमलन चिल्लाए तो यूँ तो गवर्नमेंट जो कमा हुआ फाइंड आउट करे ना गोलियां गवर्नमेंट जॾहिं एतिरी इम्पोर्टेंस ॾिए थी पोलियो खे त इन्हनि खे छो पोलियो वारनि जा क़ातिल अञा ताईं छो न मिलिया आहिनि? She and her colleagues are risking their lives for less than $3 a day. Even in Pakistan, it's a pittance. But she won't give up. Are you optimistic that you're actually going to win the war on polio here in Pakistan? अगर मां चवां थी असां अगर ज़िंदा रहियासीं त पोलियो जी जंग खटी वेंदासीं, मूं जहिड़ियूं ॿिया बि बहादुर। और इन जो गवर्नमेंट जो कमु आहे त असांखे सिक्योरिटी ॾे, इन हवाले सां फुल सिक्योरिटी ॾे त असां जहिड़ा अगरि माण्हू रहिया त अचीव करे वेंदासीं। को मुश्किल कमु न आहे, को बि कमु मुश्किल न हूंदो आहे, उन में महिनत जी ज़रूरत हूंदी आहे ऐं सिंसियरिटी सां उहो कमु कयो वञे थो। Back at the Children's Hospital, another suspected polio case has just been admitted. 18-month-old Hafsa is paralysed in both feet. The family are refugees escaping the war in Waziristan. इधर लाया, इधर अल्लाह के फजल से इतना हमारे साथ इतना ताउन किया। ये डॉक्टर लोग बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन डॉक्टर लोग हैं। इस बच्चों को पूरे खतरे पिलाया लेकिन पूरा कोर्स नहीं किया। मिसाल तौर आधा तक गया होगा, हम लोग भागने में था इधर उधर ले। The government has just made the polio drops compulsory for anyone travelling out of the tribal areas. But at least 300,000 children living there are being denied access to the vaccines because of the security situation. वो तो खतरे वाला लोग जो इसका रुकवाते हैं वो बहुत जुल्म करते हैं अपना बच्चे के साथ। समझ गया? ये देखो इसका टांग ज़ाया होता है या दूसरा चीज़ होता है, ये तो अपना जान के साथ जाती है। वो ये तकलीफ दे के अगर उसके वजह से ऐसा कोई चीज़ माजूर हो जाए ना, फिर ये कोई अच्छा बात तो नहीं है। ये ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना पेशाब कर सकते हैं। अगर ऐसा आदमी मरीज हो जाए, कितना जुल्म है। Until Pakistan wins the war on extremism, it's unlikely to win the war on polio. And as long as the polio virus still exists, the world will always be at risk. It is a global drive and a need to get rid of the virus from every country. Even if one country is harboring a virus, the disease is not eliminated in the true sense from the world.
Naseem Munir was killed, not in the street by a stranger, but shot at home by her husband, according to the police. She was 38 and left 3 children, the youngest 9-year-old Aisha. Pakistan has lost a brave and dedicated woman, and her country will be poorer for it.